जो रहे हैं लालन टॉप और आज लालन टॉप के साथ और आज जो लालन टॉप अड्डा है मेरे साथ एक स्पेशल कलाकार है जो साउथ से है, तमिल इंडस्ट्री से आते हैं। मेरे साथ विशाल है। वनकम सर, वेलकम टू लालन टॉप। Vanakkam, that's only South, but cinema is Indian cinema, so I don't call it South cinema. Yes, we will talk about that. You are coming from a filmy family, right? Because your father is Mr. G.K. Reddy, who is a film producer. So was that easier in a sense? How did No, getting into industry happen? I wasn't inclined to become an actor. I wanted to become a director. So I joined as an assistant director and I wanted to join Ram Gopal Verma sir and learn the skills of direction. And then one fine day, my dad wanted me to become an actor and then become a director. So he was very adamant. So one fine day, there is this actor, Arjun sir, actor, director Arjun sir. He and my dad decided, okay, we send him, we groom him, and we send him to act. So they groomed me. I went to street theater. If you find how much I spent time there, I learned the art of what do you say? Completely forgetting that the camera is in front of me, and then I groom myself in every possible way so that I don't be a pain in the ass with the director on the first day. And then the first film happened. I thought even then, because the cream of the cream actually was part of the first film, including the heroine. But then I didn't expect. I just thought, okay, let me do this film and see what happens next. But the second film turned. It was a turning point in my career. There was no looking back. That's it. Action hero tag. That's it. Over, done. Finished. So I reached out to every village in Tamil, and so slowly. Then after that, movies after movies, I started growing, and it's been 18 years, and now I have like a Hindi market also, which is very good. I'm happy that my films are doing well in terms of TRP and in terms of theater watching. I've seen people coming up to me and talking to me because I used to run away to the Himalayas after every film. That's my time. 7 days I used to just do whatever I can. Nobody recognizes me. I can sit on top of the bus and everything. But after the Hindi market boomed, I couldn't do that. So I started going off to New York. This is very funny, like the kind of struggles and problems that you're facing. But मैं इसी बारे में आपसे पूछने वाली थी कि जब डब होकर सैटेलाइट पर चलने लगी थी फिल्में, तो आपको फैंस से कैसे रिएक्शंस मिलने लगे या आपको वो कैसे रीच आउट करके क्या मैसेजेस मिलने लगे? एक्शन अच्छा लग रहा है फैंस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड मैंने कभी कभी बार मैंने देखा कि फैमिली क्राउड ने मेरे मेरे पिक्चर्स देख रहे हैं कई कई पिक्चर्स पर्टिकुलर पिक्चर्स देख रहे हैं एंड मैं तो वही तो याद रखकर शूट कर रहे हैं like action sequence या जो भी है film after film I decide to groom myself this next year 2023 I decided to learn gymnastics because I wanted to do something little more different than what I used to do before so I equip myself according to the result. So आप मुझे ये बताइए कि नॉर्थ की जो ऑडियंस, वहां से कुछ ऐसा मैसेज या कोई ऐसा फैन रिएक्शन आपको मिला हो विच यू वर लाइक ओह आई डिडंट नो कि वहां पे लोग देख के ऐसे रिएक्ट करेंगे? मैंने मैंने एक गिफ्ट मुझे एक गिफ्ट मिला कि एक लड़की ने भेजा कि पूरा हैप्पी बर्थडे मेरा बर्थडे था हैप्पी बर्थडे का कार्ड और एक बॉक्स है उस बॉक्स में लाइट डालने से पूरा पिक्चर का पूरा हर फिल्म का पिक्चर उसमें आएगा so I was like shocked it came all the way from Patna मैंने थैंक्स नोट भी भेज दिया उसको
it's nice. It's nice. It's so cute that they take time out not for their brother, not for their sister, but for someone unknown who they see on the silver screen. So ये सब बात याद रखकर हम पिक्चर कर रहे हैं हर पिक्चर. Sir, when you started your career, you did as a romantic hero also, but now from so many years doing सिर्फ एक action. फिल्म किया, सिर्फ एक हाँ, फिल्म के लिए. so you feel now you're doing only action, you're getting only those kind of scripts. No, it's not like that. It's everything. See, action is the genre. We see everything equipped in a film, and action will be part of the film. सिर्फ action करने से कोई फायदा नहीं. No, nobody watches films which has only action. It has to have some kind of a lead. It has to have क्यों क्यों मार रहा है, किसने मार रहा है, किसके लिए मार रहा है, ये सब questions है ना. So in that way, it's like all my films, they utilize my height, they utilize my action skills. They make sure that okay, ये है, ये कर सकते हैं, ये करने वाला है, तो करेंगे ना, एक्शन करेंगे. ऐसे ही हर स्टंट कोरियोग्राफर कर रहा है. मैंने पहले बार लाठी सिनेमा में इंडियाज बेस्ट कोरियोग्राफर, स्टंट कोरियोग्राफर पीटर हैंड के साथ काम किया. ऑलमोस्ट 80 days हमने लास्ट 45 minutes का एक्शन सीक्वेंस में काम किया. इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट पर्सन. एंड ज्यादा चोट लगने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तो हर रोज चोट लगा. So no problem. I was admitted in the hospital, and then 18 years में जो भी मुझे चोट लगा, एक ही सिनेमा में वो चोट लगा, लाठी सिनेमा में. So it's ऐसे नहीं चलेगा सर. इनम కొంచెం details you please give me full detail what happened. तो लाठी इनकी जो फिल्म है 23rd December रिलीज डेट 22nd दिसंबर को आ रही है. विनोद कुमार जी ने इसको डायरेक्ट की है, तो ये फिल्म आ रही है और इसमें ये एक पुलिस वाले के रोल में है और काफी एक्शन और ऐसे खून से लथपथ है वो. आप टीजर जो अब निकल चुका है वो आप देख सकते हो. तो टेल मी मोर अबाउट दैट एक्शन. और जैसे आपने कहा कि घाव लगे, इतना चोट लगे सेट्स पर, उसके बारे में भी हमें बताइए. ये लाठी सिनेमा क्यों किया कि हम सब एक्टर्स, मैं सिर्फ मैं नहीं, सभी एक्टर्स ने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, ऊंचे ऑफिशियल्स का रोल किया, लेकिन कोई नहीं कांस्टेबल का रोल पूरा सिनेमा में नहीं किया. तो मैंने शूटिंग करते समय एक कांस्टेबल आके बताया कि क्यों सब हमारे बारे में सिनेमा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का सिनेमा कर रहे हैं. मैं तो बताया कि अरे यार, मैं कर रहा हूँ अभी तो लाठी का सिनेमा, आपकी लाइफ जैसे कर रहा हूँ. So that is the use of the film. I play a constable. I play a father of a 7-year-old, and it's the survival of the उसकी फैमिली को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं. So वही है. और लास्ट 45 minutes एक एक्शन सीक्वेंस है. 4 क्लाइमैक्स होगा. एक फिल्म में एक क्लाइमैक्स भी सिर्फ होगा, लेकिन इस फिल्म में 4 क्लाइमैक्स होगा. Dead end, hero meets a dead end, and then they think, okay, it is over, hero khatam. But it's not like that. Then he springs a surprise. Then there's another climax. It's like that. So the last 45 minutes, Peter Master ने इतना equip किया, इतना काम किया, सिर्फ मैं नहीं, हर फाइटर ने को चोट लगा. हर बार हम जो भी एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं, हम ज्यादा रिस्क लेकर कर रहे हैं. It was a completely different experience. At one point of time, मेरे असिस्टेंट ने बताएंगे कि सर अब खून आ रहा है. I'll say where. Then I'll see myself bleeding. It was like that. I was numb to injuries. It was in an unfinished building. एक ही बिल्डिंग में लास्ट 45 minutes सीक्वेंस है. वही है ये फिल्म का खास
thing. It's going to be a visual treat. It's going to be out of the it's going to be out of the box. It's going to be something like sound plays a very important role. Background score and And Yuvan Shankar Raja has worked on the yeah. yeah. और तपस नायक ने साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं. ये दोनों इसके साथ है फिल्म. ये सिर्फ मैं हीरो नहीं, मैं हीरो, स्पीड ट्रेन हीरो, युवन शंकर राजा हीरो और तपस नायक भी हीरो. ये चार लोग जो हाथ जोड़ के एक अच्छी सिनेमा का करने के लिए हम किया. और this film it works on one particular thing, how a normal middle class constable works his way out to save his family from the worst dreaded person in the city. So that is how I agreed to the film. मैंने कांस्टेबल कभी नहीं किया. हर बार मैं ऑर्डर दे रहा हूं, इस बार मैं ऑर्डर ले रहा हूं. So that's one thing. Second thing, I have to adapt to that body language. I have to be docile. Third thing is like playing this role of a father of a 7-year-old son. And the fourth is the screenplay. The screenplay was mind-boggling. I felt okay. ये picture मैंने कभी किया ये 18 years नहीं किया. Okay, क्या कर सकते हैं, करेंगे. लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना रिस्क लेना पड़ेगा when I started off the film. But वो unfinished building हैदराबाद जाने के बाद हर रोज like मैं fourth floor से कूदा. Like I jumped and then my back and my wrist I got hurt and I went to Kerala for 25 days. I got myself healed and then I came back to shoot. And every day, because unfinished building, you have concrete, you have nails, you have everything. Finished building तो painting सभी हो जाएगा ना. ये तो unfinished building है, तो हर बार चोट लगेगा, हर बार खून आना पड़ता है. So it was an experience which I think I will not be able to again go through that experience. Especially the last 10 minutes, there was a scope for acting. This was after a film called Avanivan, which I did with a national award-winning director Bala. I got it. We'll talk about that more. I will ask again. Yeah, I got an opportunity to show my acting skills also, apart from my action, apart from everything. So that was one brownie for me. So I decided, okay, super. So when I did that 10-minute sequence, they gave me the dialogue paper. I said, छोड़ दो, मुझे dialogue paper नहीं चाहिए. 15 कैमरा रखिए. मैं तो क्या कर रहा हूं मुझे भी पता नहीं, मैं करूंगा. जो भी कर रहे हैं आप खींच लिए. और and it went with the flow. So they didn't know what I was going to do, where I'm going, how I'm going. See, there is a path for everything. Hero goes in the straight line. There is a camera, so you have to look at the camera. And so this one was not like that. I said, I will go. Just leave me. Just let me go. And I had prosthetic makeup. Like I get hurt on one eye, so one eye was closed for 60 days. So I had vision only for one eye for nine hours. So that particular sequence with that and the acting and everything, I was so frustrated. I went and hit a bonnet with my 2 hands, and I broke the bonnet because I wanted to vent out my frustration. So it was. I don't think. See, unless you give so much of effort, you won't come up with a good film. Yeah, I felt that. I really felt yes. Okay, this film has got something in it. It's got that zing. It's got that thing to make noise in the box office.
ओके, और आपने जैसे कहा कि इस बार आप कांस्टेबल के रोल में हो, तो वो हम ट्रेलर में भी देखते हैं कि वो हर हर बार सलाम सलाम ऐसे ठोकते रहते हैं बाकी सबको, तो वो आपको हाँ ट्रेलर में भी दिखेगा। आपने कहा कि एक्शन सबको पसंद है, और हाल ही में हमने बहुत सारी एक्शन फिल्में देखी है, विक्रम, RRR, कांतारा, एवरीथिंग, KGF, एवरीथिंग हैड एक्शन। हु इज योर फेवरेट एक्शन स्टार? इतने सालों में इंडस्ट्री में इतना अक्षय काम देखा है। अक्षय अक्षय कुमार। मैं नहीं सोचूंगा अक्षय कुमार। साउथ से? साउथ से मुझे विजय मुझे विजय पसंद है। सर, विजय सेतुपति, तलपति विजय, विजय देवरकोंडा, सो मेनी विजय। there is only one Vijay like Dalapati Vijay. I don't know. I don't talk about the other Vijays. ओके। So there is only one Vijay, Dalapati Vijay. उनकी भी I फिल्म आ like रही है it. वारिसू, जनवरी में। हाँ वारिस आ रहे हैं, but I like his action. I grew up looking at the way he groomed his career, so I like his action. He's my favorite. Yeah. ऑल्सो सर, आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो, और हमने और भी फिल्म स्टार्स को देखे हैं, जैसे हाल ही में पवन कल्याण है, कमल हासन है, जो पॉलिटिक्स में ऐसे एंट्री कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि बीइंग अ फिल्म स्टार और फिल्म में काम करने के बाद देन गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, वो शिफ्ट कैसे होता है? आसान होता है, डिफिकल्ट होता है? एंड what do you see happening for them now that they have a party and they're actively in politics? I don't know about the others. I'll speak for myself. For me, if I see something that is happening in the society, I get down onto the street. I don't look at the TV and say, ऐसे ही है समाज, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? And I don't eat. I don't do that. I don't keep my house alone clean. I step out of the house and I make sure that I try to do something. See, uh, politics for me means social service. आप ही 5 रुपए दे सकते हैं, मैं 100 रुपए दे सकते हैं, दूसरे वाला तो 1000 रुपए दे सकते हैं, सभी वाले पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन मीन सोशल सर्विस। क्यों इतने पार्टी चाहिए? सोशल सर्विस आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं ना हम। आम आदमी के लिए काम करने से क्यों इतना इतना पार्टी हमको चाहिए? So for me, politics, getting into politics is like not because it is a jump because other actors are jumping into politics. For me, I don't know. The time will come. I go by instinct. I think at that point of time and I do it. I don't think 5 years later or 10 years later मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं. I don't do that at all. आपने बाला की बात की, उनके साथ काम करने की बात की, एंड वी लव हिज वर्क एज अ डायरेक्टर। आपने अवन एवन, तो मुझे वहां से कोई किस्सा या कहानी बताइए उनके साथ काम करने के लिए, के साथ, और उसके बाद आप वापस उनके साथ कब कोलैबोरेट करोगे? बाला बाला साहब एक 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 डेविल है। एक एक आई वुड से लाइक मेरे माँ बाप को भी मालूम नहीं मैं समथिंग सपोर्ट माई सेल्फ। बाला साहब को कैसे मालूम मुझे? मैं कई बार पूछा उसको, कैसे आपको मालूम मैं ये कर सकता हूँ एक लड़की जैसे डांस करने के लिए, नवरसा करने के लिए, और जो भी स्क्विंट पूरा सब मैंने बाला सर सिनेमा करते समय पहले 15 दिन शूटिंग किया, और आई थिंक 20 दिन के बाद मुझे बुलाया और बताया कि तू तू लॉयोला कॉलेज विशाल है, मेरे विशाल नहीं, कोई कोई मुझे चाहिए तेरे पास। So he came up with this idea, and then it was like so difficult that after every 6 shots I used to puke because I used to have a migraine. I used because of a squint. So 50th day or 100th day मैंने देखा कि स्टार्ट कैमरा बताने से already it'll go. I might not be in the shot also. So it was like a learning experience. हम नॉर्मल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, हार्वर्ड में पढ़ सकते हैं। ये मैं हार्वर्ड में पढ़ा। बाला सर का सिनेमा तो हार्वर्ड में पढ़ने जैसा लगा मुझे। सो इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज
जितने भी करोड़ों रुपए देने से ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। मैं तो 15 दिन 16 दिन एक लड़की जैसे साड़ी पहन हाँ, के लड़की के डांस भेस में आपके आपसे डांस करवाया था और वो ओपनिंग बकेट सीक्वेंस लिस्ट में में। था। हाँ, मैं टिक किया। लाइक वो फेस्टिवल में सिर्फ लड़कियों डांस कर सकते हैं, लड़के के लिए काम नहीं। तो मैं लड़की जैसे डिस्गाइज में आई डांस विद 16 गर्ल्स। पहले 5 दिन उसने वो जो वो अटायर है ना, 2.5 hours लगेगा वो साड़ी और फूल और and the entire dress and everything. 5 days he didn't shoot. Sixth day he told me go 1,000 लोग आएगा हर रोज। विशाल लड़की रोल में काम कर रहे हैं, हम देखने के लिए जाएंगे। सो उस शहर में वो छोटा वाला विलेज है वो, वहां तो 1,000 लोग आएगा। वो बड़ा सर बताएगा कि वो लड़कियों के साथ तू बात कर, लड़कों के साथ बात मत कर। So I used to talk to them. I used to be with them. Then sixth day he started shoot. He said, "Okay, the difference nahi dikh raha hai. Do the song." So I did the song. Sixth day till the 16th day. Uh, uh, the the 13th day, I think I remember, I became a full woman. I forgot that I was a man. And ये experience, this I have to tell because it's very important. There was a camera here. There was a camera here, and मैंने साड़ी पहना। वो तो कैमरामैन वहां से बता रहे हैं कि थोड़ा सा दिखाइए ना। मैंने बताया कि सॉरी सर, मैं नहीं दिखाऊंगा। सो आई वाज लाइक, बाड़ा सर तो हंस रहे हैं। तो आई सेड नो 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 वे सर, आई विल नॉट, नो 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 क्लीवेज, नो शोइंग क्लीवेज। And I was wondering at that point of time, the psyche of a woman, what will newcomers go through when they have to, do glamour in front of their parents, in front of the television। देखने में क्या क्या हालत होता है उसको। So when I went back home after 16 days, that was my last 16 days. We shot for 230 days. मैंने घर जाके खाने के लिए बैठा, और माँ ने और दे रहे हैं। मैंने नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ही किया। नहीं मैं मुझे नहीं चाहिए। शी स्टार्टेड क्राइंग। शी सेड मेरे बच्चे का क्या हो गया, वो ऐसे ऐसे बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सो आई जस्ट ran away to Himalayas to come out of that character, to come out of that, to come back to normalcy. I ran away. So that whole experience was magical. So I'm waiting for to join Bala sir and dedicate myself completely to him, and I'm sure that the magic will be even better in future। एंड आप मुझे बताइए आपकी हाइट क्या है? 6'2.5"। 6'2.5" की हाइट रखने के बाद टू ड्रेस अप एज अ वुमन इन अ साड़ी एंड बी कन्विंसिंग, लाइक हाउ डज वन इवन इमेजिन दैट, राइट? ये तो पहले, this was one best compliment, okay, I got। I'll have to tell you this। they first day पर शो मेरा फ्रेंड्स ने, मैंने नहीं बताया कि लड़की का रोल कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स ने देखकर पहले सॉन्ग आया, पहले सिनेमा का फर्स्ट पार्ट इज द सॉन्ग। सो सॉन्ग आने के बाद देख रहे हैं, और देखने के बाद 30 seconds के बाद कौन है रे, ये लड़की कहाँ से लाया ये लड़की। एंड दे वर लुकिंग, they were actually ogling at me। so so I was like, then after that they looked into the screen and they said, bloody hell, this is Vishal। So they came back to me and said, idiot, why didn't you tell us that you're the
person who did that. I said, I thought, let it be a surprise to you. And they said, lucky you, you told us. It was like a fantastic moment. That was a compliment. See, without knowing who you are, and they watch you, and then getting to know who you are is something which is a very rare compliment for a hero, for an actor, for a main lead. आपने एक कैंपेन किया अगेंस्ट तमिल रॉकर्स क्योंकि पायरेसी इतना बड़ा इश्यू है इंडस्ट्री में, तो वो सब होने के इसका नाम मत लेना ऐसे, उसको इतना पब्लिसिटी नहीं देने देना में है। कोई फायदा पर मेरा मेरे पास 4 साल का हम जो भी काम किया, 4 साल का डिटेल्स है हमारे पास, मैंने दे दिया। वो गवर्नमेंट कर सकते हैं या प्रोड्यूसर कौन सा कर सकते हैं, जो हमको हमको कोई डिटेल्स पता चला तो दिया, तो करने से, see, I don't know why government bans porn sites, but I don't know why they don't ban all these sites which pirated web. पायरेसी साइट्स। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या आपने नोटिस किया कि पायरेसी कम हुआ है, कोई फर्क पड़ा है इंडस्ट्री? सी पायरेसी होने से क्या क्या है कि बस 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 ड्राइवर्स या लॉरी ड्राइवर्स या जो भी है वो देख रहे हैं। मैंने शूटिंग समय में मैं देख रहा हूँ कि हमारे ड्राइवर सब लोग हिंदी सिनेमा ऐसे ही देख रहे हैं। मैंने पूछा कि कहाँ से मिला आपको या ये सिनेमा? सर ये साइट में मिल रहे हैं सर, ये साइट प्रेस करने से पूरा सिनेमा मिल रहा है सर, एचडी प्रिंट मिल रहा है। So it's like it's there, that menace is there, but it can be eradicated easily if the government involves in it. सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे बिगिनिंग में जब हमने बात करना शुरू किया तब आपने कहा था कि इंडियन सिनेमा है, पर हम देख रहे हैं कि लोग साउथ की फिल्मों को और ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा वो फिल्में चल भी रही है एज कम्पेयर टू से व्हाट हिंदी सिनेमा इज मेकिंग। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? ये तो पहले से ही हुआ, अभी नहीं, पहले से ही हुआ। पहला तो रीमेक था, वांटेड और बॉडीगार्ड और कई सिनेमा रीमेक किया। सी साउथ सिनेमा में कंटेंट ज्यादा पूरी से अटेंशन दे रहे हैं, स्पेशली मलयालम सिनेमा। ये साउथ और नॉर्थ का डिवीजन मुझे पसंद नहीं। इट इज लाइक नाउ यू कैन नॉट रीमेक अ फिल्म, क्योंकि ओटीटी में आ रहे हैं ना, चार हफ्ते के बाद ओटीटी में आ रहे हैं, तो रीमेक करने से क्या फायदा है? वही आप दिख रहे हैं ना, सो देयर इज नो पॉइंट। सो नाउ रीमेक इज आउट ऑफ द विंडो, बट साउथ सिनेमा इज डूइंग वेल is because of content. Content is what people want. They audiences or perception has completely changed after Corona. During Corona, during the lockdown, क्या देख रहे हैं? कोरियन सिनेमा, इजिप्शियन सिनेमा, चाइनीज सिनेमा, सभी सिनेमा देख रहे हैं। तो they have expanded their mindset and they want something new. They don't want the mundane stuff. So that is what is the outcome of what is the result right now. You're watching over this whole year. You've been watching. It's not like Drishyam that came out last week, or now Shehzada, which is Ala Vaikunthapura remake. So they're still making remakes. Remakes कर सकते हैं। Remakes दृश्यम तो मलयालम सिनेमा है ना, ये तो तमिल सिनेमा नहीं। तमिल सिनेमा रीमेक कैसे? You can't remake it. It's impossible. Because already most of it are in Hindi channels, and most of it are being watched by Hindi audience. तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा कर सकते हैं, और है, it's not like पूरा बंद है, ऐसे नहीं है। चांस है रीमेक करने के लिए, चांस है। थोड़ा सा राइटर्स रूम में चेंज करके कर सकते हैं वो हिंदी सिनेमा भी। बट अभी तो क्यों इतना नॉइज कर रहे हैं साउथ सिनेमा?
because of the box office numbers. Because of the box office numbers, that's all. That's what I would like to say. But it has been there for a long time. From a long time, Malayalam cinema, Tamil cinema, Telugu cinemas all have been doing well in Hindi also. And as audiences, we only want to keep seeing more of this. And जैसे इन्होंने बताया 22nd December को इनकी फिल्म आ रही है. So, sir, are you going to take this film pan India? We are releasing in a very big way in Hindi also, because doing such a big film, it's there's no point in just putting it in Sony Max and making people watch it. We want to show it to people in theaters, and it is the right platform. So they decided. See, it was not my idea. सिनेमा देखने के बाद सभी लोग बताया कि ये हिंदी में भी करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा. So we decided we'll go for a Hindi release, and we have started the promotions, and we are going for a 22nd release. In spite of competition, yes, there is a competition always, but may the best film win. It's always all the best film wins. एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि आप हिंदी में ऐसे रिलीज कर रहे हो तो हम भी बातचीत ऐसे कर पाए, हमारी ऑडियंस भी आपसे सुन पाई. थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाल के, आप डबिंग कर रहे थे, आपने वक्त निकाल के हमारे साथ इंटरव्यू किया. इट वाज अ लवली चैट. थैंक यू विशाल. Thank you. It was my pleasure. Thank you, ma'am. ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி. धन्यवाद. शुक्रिया. Thank you.